Hello dear shining stars, a very warm welcome to your Hindi class with your Hindi teacher Aprajita. And children, today we are going to start a new chapter from our Hindi course book, Saral Hindi Pathmala, class 6, and the chapter is chapter number 11. अगर मैं पेड़ बन जाऊं, if I become a tree, what will happen? Just imagine if you become a tree, if I become a tree, then what all things we are going to face, what all things a tree faces. Let's read in this chapter. राजन सो रहा था. अचानक उसे एक सपना आया. Rajan, a boy, was sleeping and suddenly he dreamt. He started dreaming. उसने सपने में देखा कि एक आदमी हरे भरे पेड़ को काट रहा है. And in his dream he saw that a man is cutting a green tree. Look here, the man has a axe in his hand and he is cutting the tree. पेड़ चीख चीख कर कह रहा है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस शैतान से बचाओ. And that tree is shouting and saying that help me, save me from this devil. This devil is bent upon cutting me down. ये शैतान मेरे उपकार को भूलकर कत्ल करने पर तुला है. This devil has forgotten all my favors and he is bent upon cutting me down. This tree is shouting and saying, and Rajan is dreaming about this. राजन उस आदमी को पेड़ काटने से रोकने की कोशिश करता है. Now in his dream what he sees that Rajan is stopping that man to cut down the tree. He is trying to stop him. पर वह आदमी राजन को डांट कर वहां से भगा देता है. But that man, that devil who is cutting the tree, that man drives away Rajan from there. अचानक उसकी नींद टूट जाती है. And suddenly he woke up from his sleep. अब उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर पेड़ हम पर क्या उपकार करते हैं. Now Rajan started thinking that what favors do these trees do on us, because that tree was saying that this man has forgotten all my favors, so he just started thinking this. उस आदमी ने पेड़ के किस उपकार को भुला दिया था. Now Rajan starts thinking that what are the favors which that man has forgotten. इन्हीं सवालों में उलझा हुआ वह सुबह होते ही अपने दादाजी के पास गया और उनसे पूछा, दादाजी, पेड़ हम पर क्या क्या उपकार करते हैं, मुझे बताइए. Now he was just amongst these questions, all the queries which were coming in his mind, he just got up in the morning. As soon as he got up, he just went to his Dadaji, his grandfather, and there he asked him, Dadaji, just tell me what are the favors the trees do on us. Which all favors are there which these trees do on us? Just tell me. उसके दादाजी ने बताया, पेड़ हमें फल फूल देते हैं. Now his Dadaji started telling him about the favors which the tree does on man. So he says that these trees give us fruits and vegetables, fruits, flowers and vegetables. शीतल छाया देते हैं, they give us shade. पशु पक्षियों को रहने के लिए स्थान और खाने के लिए भोजन देते हैं. These trees give shelter to the birds and animals and give them food too. इनसे हमें सेहतमंद बने रहने के लिए बहुत सी औषधियाँ मिलती हैं. And we get many medicines from these trees. बहुत सी अन्य उपयोगी चीज़ें भी मिलती हैं तथा सूखे पेड़ों से जलाने की लकड़ी भी मिलती है. Now his Dadaji again tells him that we get many more necessary things from these trees, and the dry trees are used for firewood, to burn fire. They are used as firewood.
और क्या क्या मिलता है दादाजी? राजन ने पूछा. Now Rajan is very curious to know more things. What all other things we get from the trees? दादाजी बोले, पेड़ बारिश करने में सहायता करते हैं. दादाजी said that these trees they help in the rains and बारिश से ही हमें पीने और अन्य कामों के लिए पानी मिलता है. And due to rains only we get the water to drink and use the water in for other purpose. पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है. We get the main thing, the foremost thing which we get from the trees is the oxygen. इसके बिना हम तो क्या, पशु पक्षी भी जीवित नहीं रह पाएंगे क्योंकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है. Now Dadaji says that without the oxygen, not only we, the animals, the birds, they will also not be able to survive because oxygen is the main thing that we breathe in. It's the most important thing for us to live. राजन पेड़ों के इतने सारे उपकारों और उपयोगों के बारे में जानकर हैरान रह गया. Now Rajan is very astonished listening to all these favors which the trees do upon a man. उसके मन में आया कि दुनिया के सारे पेड़ पौधे सुरक्षित होने चाहिए. Now he thought in his mind that all the trees in this world should be saved. They should survive. वह झट से बोल उठा, दादाजी अगर मैं पेड़ बन जाऊं तो पता है आदमी से क्या कहूंगा. Now he says to his Dadaji that Dadaji, do you know if I become a tree, what would I say to the man? क्या बेटा? दादाजी ने पूछा. दादाजी asked him, what son, what will you say? यह कि मैं पेड़ हूँ, मैं पेड़ हूँ, मेरे उपकारों को मत भूलिए. मैं वह हूँ जो पृथ्वी पर न रहे तो तुम भी मर जाओगे. Now Rajan says that I would say that I am a tree, I am a tree. Don't forget my favors. I am that which if not there on this earth, you all will not be there on this earth. Because if I am there, then only you will be able to survive. यह कहते हुए राजन की आंखों में आंसू आ गए. And while speaking this, Rajan was in tears. दादाजी ने उसे गले लगा लिया and दादाजी hugged Rajan. फिर दादा पोते ने मिलकर कसम खाई कि वे अपने गांव के पेड़ों की रक्षा करेंगे. And then the grandfather and the grandson, they both took an oath that they would protect all the trees in their village, of their village. उस दिन से ही दोनों इस काम में जुट गए. गांव में हरियाली और खुशहाली छा गई. And from that day, they both just started working upon it, and in their village there was greenery all over and there was happiness all over. लोग दूर दूर से राजन का गांव देखने आने लगे. People from far away, they started coming to see Rajan's village. राजन सबसे कहता, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, हर गांव को हरा भरा बनाओ. And whosoever came to Rajan's village to see that village, he used to tell, Rajan used to say that person, those people, that plant trees, save trees, and make your village a green one. So children, we also got a lesson from while reading this chapter. After reading this chapter, I hope you all must have understood that how these trees are necessary for us. We should save them, we should protect them, we should not cut them down. Okay children? So, look, they started planting trees and how green their village became. So now children, what did we learn? पेड़ पौधों को बचाना means to save the trees and the plants. पेड़ पौधों का उपयोग समझना means to understand the use of the trees and the plants. Now these are some of the word meanings. अचानक means suddenly. शैतान, devil. सवाल, question. औषधियाँ
medicines, बारिश, rain, खुशहाली, prosperity, उपकार, favors, कोशिश, effort, सेहतमंद, healthy, उपयोगी, useful. So these are some of the words with their meanings. These means that the Hindi words are there and the meaning in English is there. So just go through these word meanings again, read them again so that you understand it much more better. Now children, let's do some exercise here. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Answer the following questions. पेड़ ने आदमी को क्या बताया? पेड़ ने आदमी को क्या बताया? What did the trees tell to the man? What did that tree tell to that man? पेड़ ने आदमी को अपने उपकारों के बारे में बताया. The tree told about the favors which the tree does to a man. राजन ने पेड़ों के बारे में किससे बात की? With whom did Rajan talk about the trees? Rajan went to his grandfather to talk about the trees. राजन ने अपने दादाजी से पेड़ों के बारे में बात की. सूखे पेड़ों से हमें क्या मिलता है? What do we get from the dry trees? We get firewood to burn fire. We get firewood from the dry trees. हमें सूखे पेड़ों से जलाने के लिए लकड़ी मिलती है. किसकी आंखों में आंसू आ गए? Who was in tears? Rajan was in tears. So राजन की आंखों में आंसू आ गए. Now some written questions. सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए. Tick on the correct option. किसे अचानक एक सपना आया? Who dreamt? राजन को, दादाजी को, पेड़ को? राजन को. ओके? गांव में क्या क्या छा गई? हरियाली, खुशहाली व दोनों. So there was greenery also in the village and there was happiness also in the village. So both हरियाली, खुशहाली, दोनों. Now let's move further. रिक्त स्थान भरिए. Fill in the blanks. Dash सो रहा था. Who was sleeping, children? राजन सो रहा था. Rajan was sleeping. So write down Rajan here. अचानक राजन की डैश टूट जाती है. Suddenly he woke up from his sleep. क्या टूट जाती है? नींद. नींद means sleep. He gets up from his sleep. सूखे पेड़ों से जलाने की डैश मिलती है. What do we get from the dry trees? We get firewood. जलाने की लकड़ी. जलाने की क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है. पेड़ पौधों से हमें डैश मिलती है. पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है. क्या मिलती है? ऑक्सीजन. Which is the most important thing for our life, for our survival. सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए. Tick the true and cross the false statements. राजन खेल रहा था. Was Rajan playing? No. This is wrong. राजन उस आदमी को पेड़ काटने से रोकता है. Did Rajan stop that man from cutting the tree? Yes, this is correct. Put a tick. पेड़ हमें कांटे देते हैं. Trees give us thorns. No, this is wrong. पेड़ बारिश करने में सहायता करते हैं. The trees help in the rains. Yes, they help in bringing down the rains. This is correct. लोग दूर दूर से राजन को देखने आने लगे. People from far away, they started coming to see Rajan. No, this is wrong. They started coming to see Rajan's village. Now what's next? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Answer the following questions. पेड़ क्यों चीख रहा था? Why was the tree shouting? पेड़ इसलिए चीख रहा था क्योंकि क्यों चीख रहा था? क्योंकि एक आदमी
क्या कर रहा था? What did that man was doing? That man was cutting the tree. That's why the tree was shouting. क्योंकि एक आदमी पेड़ को काट रहा था, पेड़ को काट रहा था. ओके? पेड़ पशु पक्षियों को क्या क्या देते हैं? What does the tree give to the birds and the animals? The trees give shelter and food to the birds and the animals. पेड़ पशु पक्षियों को क्या क्या देते हैं? पेड़ पशु पक्षियों को रहने का स्थान व भोजन देते हैं. भोजन मीन्स द फूड, भोजन देते हैं. नेक्स्ट इज पेड़ों से हमें क्या प्राप्त करते हैं? हम क्या प्राप्त करते हैं पेड़ों से? पेड़ों से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं? देयर आर मेनी थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम अ ट्री. सो जस्ट राइट डाउन व्हाट डू वी गेट. पेड़ों से हम छाया मीन्स शेड, देन औषधियाँ मीन्स मेडिसिन्स, औषधियाँ. What else do we get? फल फूल means flowers, fruits, vegetables. फल फूल, then बारिश, we get rains. And what else do we get? बारिश होती है तो पानी भी मिलता है. We get water also. पानी और oxygen. The most important thing is oxygen. पेड़ों से हम छाया, औषधियाँ, फल फूल, बारिश, पानी और ऑक्सीजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं. प्राप्त करते हैं. ओके? राजन ने क्या कसम खाई? What oath did Rajan take? राजन ने सभी पेड़ों को बचाने की कसम खाई. Rajan took oath to save all the trees. Now, these are some words for dictation, children. Just read them and learn them. शैतान, अचानक, सेहतमंद, औषधियाँ, खुशहाली. Okay? Now, let's move further. We come to the language part. भाषा से उदाहरण देकर क्रिया के रूप बनाइए. Look at the example and make verb forms. One example is there. One has been done for you. Let's read it first and then understand it, and then we'll do rest of them. चल, चलना, चला, चलेगा. Now these are the different forms of these verbs. चल is a verb. चलना, चला, चलेगा. लिख. So what will be the different forms of this verb? लिख, लिखना, लिखना, लिखा, लिखेगा. Okay, children? पढ़, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा. And the last one is दौड़, दौड़ना, दौड़ना, दौड़ा and दौड़ेगा, दौड़ेगा.
छोटे छोटे वाक्य बनाइए. Make small sentences. Few words are given here. We have to make small sentences with these words. Sapna means dream. आज मैंने एक सपना देखा. Fine. So today I dreamt. सपना, underline सपना. Fine. शैतान. मेरा भाई बहुत शैतान है. My brother is very naughty. मेरा भाई बहुत शैतान है. So we underline the word with which we have made the sentence. दादाजी. मेरे दादाजी ने मुझे घड़ी दी. मेरे दादाजी. You can make any sentence, children. मेरे दादाजी ने मुझे घड़ी दी. It means that my grandfather gave me a watch. पेड़. पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं. पेड़, the tree gives us oxygen. पेड़ means tree. पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं. And the last one is दुनिया. दुनिया means world. हमें दुनिया के सभी पेड़ बचाने चाहिए. हमें means we should protect, we should save all the trees of the world. And underline दुनिया. राजन और दादाजी व दादी जी की बातचीत पढ़िए और पूरी कीजिए. Now here's a conversation between दादाजी, the grandfather, the grandmother and Rajan. Read and complete the conversation of Rajan, grandpa and grandma. राजन. दादी जी, क्या पेड़ हम पर उपकार करते हैं? राजन से ask grandma, do the trees favor us? So what's the reply दादी जी gives? दादी. हाँ राजन. Now complete this. We have to complete this conversation. What दादी जी said, what grandma said. Grandma says, हाँ राजन, पेड़ हम पर बहुत उपकार करते हैं. दादी जी says, yes Rajan, the trees favor a lot to the man. राजन. तो पेड़ हमें क्या क्या देते हैं दादी जी? Now Rajan asks, so what things do the trees give us grandma? दादी. लकड़ी, फल फूल, औषधियाँ. Now what else? बारिश, the rains, the water, पानी, छाया, shade. They give us shade. Okay? And what else? पशु पक्षियों के रहने की जगह, पशु पक्षियों को रहने की जगह, उनको भोजन. And पशु पक्षियों को रहने का स्थान. और what else? ऑक्सीजन देते हैं. और ऑक्सीजन देते हैं. These are the things the trees give to a man. दादाजी. राजन, तुम्हें पता है पेड़ नहीं होते तो हमारा क्या होता? Rajan. And the grandpa says, Rajan, do you know what would have happened if these trees were not there? Rajan. हम जीवित ही नहीं रह पाते क्योंकि ऑक्सीजन, पानी,
खाना और dash से मिलते हैं. Means Rajan says that we could not be alive because we get oxygen, water, food and or छाया और औषधियाँ. औषधियाँ means medicines also we get from the trees. औषधियाँ पेड़ से मिलते हैं. Fine. So we could not be alive because we get oxygen, water, food and medicines from the trees. Okay. So children, here we end up with this chapter and I hope you all have learned a good lesson from this chapter that we all should save the trees. We should plant more and more trees and make our earth a green and a happy one to live in. So children, here we end up with our Hindi course book and I hope you had a very good time, very good journey with me and I too enjoyed with all of you because we have imparted a good knowledge, we have got a good knowledge and I hope you all will go through all the lessons and very thoroughly and because it's necessary again and again I say it's very necessary to read again the chapters. So children, stay blessed and happy learning. Bye.